बचा था। बैलोट मेरा बचा था बचा है 25 और 26 और 25 के साथ बैलोट 22 जितना आर्गुमेंट हो गया है सप्लीमेंट करना तो बताइए, उसी को रिपीट मत करिएगा। नहीं, रिपीट बिल्कुल अलग है सर, ठीक है। बिल्कुल। बैलोट आइटम नंबर 25 25 दो जी। WPS नंबर WPS नंबर 4142 4142 2023 and one are the same 22, that is 3549 35 both are the same। ठीक। और 26 भी लगभग सेम है, वो एक्स पुलिस डिपार्टमेंट का है बस। और 28 है ना। हाँ, सनी कुमार। चलिए बताएं। My lord, may kindly come to my petition page number 5। पेज नंबर 5 मतलब पार्ट ऑफ प्लीडिंग जी, para 9.3। The whole calculation has been done in the petition itself, my lord। 9.3 9.3। My lord, in my argument there are two aspects। One is the if reservation rules not applied in prelims examination, the prelims examination only for the scrutiny of the candidate। तो आपका कहना रिजर्वेशन रूल्स प्रीलिम्स में एप्लीकेबल नहीं है। There is a judgment by the Honorable Supreme Court, my lord। तो पहला Total application form is received on 67,393, 67,393। The candidates appear 62,990। Rest of the candidates are the absent। बताइए, फिर से बताइए। My lord, total application were received 67,393 and 62,990, 62,990 were appeared in the prelims exam। My lord, in para 9.3, if my lord may read, everything is in the writ petition, my lord। If the reservation rule not applied in the prelims exam, then what happened? The total post is the 975। It multiply 20 times। 20 times लेना है इनको, वो 19,500 होते हैं फॉर मेंस, फॉर मेंस के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के बेस पे। उसके पहले सर ये पेज नंबर ये देख लेंगे मेरा रिट पिटीशन का, पेज नंबर 16 रूल्स है जो गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी अधिसूचना, पेज ये पेज 12 ऑनवर्ड्स है। रिलेवेंट क्लास, रिलेवेंट पेज 16, पेज 16 2 पैरा 2 प्रारंभिक लिखित परीक्षा। उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणागुण सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। टोटल अभ्यर्थियों से 20 टाइम्स एंड अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती है। 20 टाइम पे लास्ट जो कैंडिडेट है उसको जितने मार्क्स मिले हैं उसके बराबर वाले सब। Therefore, my lord, may come to the return again para 9.3 in my writ petition। I have mentioned that। नहीं, पहले तो ये बताइए, ये प्रीलिम्स में रिजर्वेशन को उन्होंने एप्लीकेबल अप्लाई किया है कि नहीं किया?
ये इन्होंने कर दिया है। आपका कहना है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है चल ठीक। जी माय लॉर्ड, देयर इज अ जजमेंट। नहीं अभी ठीक है, उसमें फिर हाँ, आ जाइएगा, अभी जो आप रेफर करें तो बताइए। मतलब इस पार्ट पे है, वो जो प्रीलिम्स के पार्ट पे है। ठीक। ये मैंने दोनों एस्पेक्ट लेके चला है। हाँ। अब इसमें 975 का 25 टाइम्स 19,500 होता है साहब। 19,500 में से जो रैंक पाए हैं 18,013 से 19,619 तक के जो कैंडिडेट हैं ओवरऑल रैंकिंग में, दे ऑब्टेन द 134.375 मार्क्स। 18,013 से 19,619 तक का हम्म ये जो ओवरऑल रैंक है वो उनका जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से है, उसमें 134.375 पाए हैं। और 20 टाइम्स आना है 19,500, लेकिन अंतिम अंक चूंकि 134.75 है 19,500 में लड़के का, तो इसलिए 19,619 तक का इनको लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस माय आर्गुमेंट इज दैट विदाउट रिजर्वेशन एंड प्रेजेंट पिटिशनर हैविंग द ओवरऑल रैंक 7,396 in unreserved category. I'm talking about unreserved category में, उसमें वो पाया है 165.625। तो therefore my lord he is under the zone of consideration for the main examination on the basis of his marks। जी। 18,013 से 19,619 के बीच में जितने बच्चे हैं वो 19,619 तक के सारे बच्चों को टॉपर को लेना है, रेस्ट ऑफ को छोड़ना है। और 19,000 में ये जो पिटिशन नंबर 22 और 25 पे हैं, पिटिशनर नंबर 22 का उसका भी सेम मार्क्स है 165.625 और इसका भी सेम। तो देयरफॉर ही इज द एंटाइटल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। फर्स्ट आर्गुमेंट माय लॉर्ड। नहीं, इनका ओवरऑल रैंक कौन सा है? 7,396 द प्रेजेंट पिटिशनर इन पिटिशनर नंबर 25 एंड पिटिशनर नंबर 22 7,175 ओवरऑल रैंक। आपको मेंस में नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जो भी इनका क्राइटेरिया रहा वो रिजर्वेशन का, वो उसी का हमारा आपत्ति मतलब था। रिजर्वेशन लागू किया इसलिए आपको नहीं लिया। अब नहीं वो दिया। क्या किए हैं ये तो यही बता पाएंगे। उसके बाद इनकी रिप्लाई में भी है, वो रिप्लाई भी हमारे फेवर की ही आ रही है। ठीक है। My lord, the second argument is para 9.54. 405 posts. That is the only for unreserved category. According to the advertisement, the total post for the unreserved candidates is 405, my lord. According to the page P3, page 38. ये 405 सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का है। अब 405 को सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी को भी अगर लेते हैं, इफ द रिजर्वेशन रूल विल बी अप्लाइड नाउ द सेकेंड टर्म, देन 405 मल्टीप्लाई 20 टाइम्स वुड बिकम 8100। फिर से बताइए सर, इसी में लिखा हुआ मैंने पूरी प्लीडिंग में है 405 पोस्ट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स विच 20 टाइम्स वुड बी 8,100। अब 8,100 अनरिजर्व कैंडिडेट को इनको लेना है। 8,100 कैंडिडेट में से 7,854 टू 8,687 इन्होंने सेम मार्क्स पाए हैं 162.500। आपसे कम? नहीं, हाँ, हमसे कम। ये 7,854 से 8,687 ये पूरा उनके मेरिट लिस्ट का डिटेल है। उसका मैंने लगाया भी है डेमोस्ट्रेट करने के लिए पेज पीछे अपने पिटीशन में। अब 162.50 ये मार्क्स है, तो अकॉर्डिंग अब इसके हिसाब से साहब 8,687 तक के सब अवेलेबल है, सब एलिजिबल है मेंस के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट। एंड द पिटिशनर हैविंग मार्क्स 7,396 ओवरऑल रैंक, सॉरी। ये हमने अनरिजर्व कैंडिडेट का ओवरऑल बताया। अब अनरिजर्व कैंडिडेट में रिजर्वेशन अप्लाई मैं करवा रहा हूं, तो अनरिजर्व में 3 रिजर्वेशन अप्लाई होंगे साहब। एक वुमेन्स का, एक एक्स सर्विसमैन का और एक पुलिस का।
वुमेन्स का 30%, हाँ, एक्स सर्विसमैन का 10% और पुलिस का 5%। उसका मैंने नेक्स्ट कैलकुलेशन किया है 9.5। अब जो महिला का रिजर्वेशन इसमें अप्लाई होगा अनरिजर्व कैंडिडेट में, सर उसमें 305 पोस्ट महिलाओं के लिए बचती है। 405 में से 100 प्लाटून कमांडर का हटा देते हैं तो मात्र 305 पोस्ट महिलाओं की बचती है। 305 में महिलाओं को अगर रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं ये तो 20 टाइम्स उसको लेना है, तो दैट वुड बी 6100। अब 6100 के रेशियो में द 9.5 का फिफ्थ लाइन 6100 आता है। सब 405 में से 100 महिलाओं वाला घटा दिए, वो प्लाटून कमांडर जिसके लिए दे आर नॉट इंटाइटल्ड। अब ये इनका जो रैंक है 5624 से 6328 ओवरऑल रैंक, इनका मार्क्स 171.875 है महिलाओं में। मतलब 30% रिजर्वेशन पे जो 305 पोस्ट का, द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, ऊपर से टॉप से देखेंगे, ये 6328 तक का मेरिट से लेंगे। फिर 305 पोस्ट का 30% अगर निकालते हैं तो 91.5 पोस्ट आती है महिलाओं की, वो अलग हो जाएंगी। तो 91 का 20 टाइम्स इनको लेना है महिलाओं के लिए सिर्फ, वो आता है 1830। ये अब 1830 में से 6328 तक की जो रैंकिंग थी साहब, उस 6328 तक की रैंकिंग में 880 महिलाएं ऑलरेडी हैं। तो रेस्ट ऑफ 950 महिलाएं इनको नीचे से लेना पड़ेगा, 6328 के रैंक के नीचे से। 880 ऑलरेडी 6328 तक में है, तो ये 950 का फिगर याद रखें सर अपन। फिर उसके बाद 9.6 में मैंने रिजर्वेशन दिया किसको, 405 पोस्ट पे 10% एक्स सर्विसमैन। जी, अब एक्स सर्विसमैन का टोटल फिगर आता है सर 810 पोस्ट, 40.5 पोस्ट इनका बनता है 405 में। एक्स सर्विसमैन का टोटल 405 अब आ जाएगा। पोस्ट 40.5 पोस्ट इनका बनता है 405 में। एक्स सर्विसमैन का टोटल 405 अब आ जाएगा। तो उसमें 40.5 पोस्ट इनकी आती है, जिसका 20 टाइम्स होता है 810। इतना इनको लेना है एक्स सर्विसमैन को। एक्स सर्विसमैन का जो 517 एक्स सर्विसमैन है वो ऑलरेडी उस लिस्ट में है, जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 507। हालांकि इनकी रिप्लाई में 510 ही आया है। मैं अपने हिसाब से जो कैलकुलेट किया हूं एक्स सर्विसमैन का, उसमें 517 आए थे। अब 8687 रैंक तो जो हमको पूरा लेना है ओवरऑल, उसमें 50 कैंडिडेट्स करीब ऑलरेडी हैं और 470 कैंडिडेट इनको बिलो रैंक से लेना है, टोटल 810 में से। देयर आफ्टर माय लॉर्ड द नेक्स्ट पेज इज फॉर एक्स पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें जितना इनके कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी उतने की लिस्ट में आ चुके हैं जी। तो देयरफॉर द पैराग्राफ 9.8 माय लॉर्ड, अब 950 और 470, 950 महिलाओं का जो रिजर्वेशन का बच रही थी, 880 आ चुकी थी उस लिस्ट में, और ये 470 जो एक्स सर्विसमैन के हैं, ये टोटल मिला के 1420 कैंडिडेट होते हैं। अब इनको 1420 कैंडिडेट ये नीचे से लेना है। अब वो 8687 में से अगर 1420 घटा देते हैं तो रैंक आता है 7267। और 7267 का जो रैंक है वो 7050 से लेके 7853 तक का 165.625 मार्क्स जो है। तो अगर रिजर्वेशन तीनों कैटेगरी को देने के बाद भी कैलकुलेट करते हैं सर, तो 7050 से 7853, ये 853 पूरे कैंडिडेट उसमें आएंगे जिनका 165.625 है, और पिटिशनर ऑब्टेन 165.625। देयरफॉर द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर मेन एग्जामिनेशन।
if only in the unreserved category the reservation given to the women's, ex-servicemen and the police department, उनका सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बावजूद जो रैंक आ रहा है वो 7,853 आ रहा है। जो लास्ट कैंडिडेट है 625 वाले, उसमें हमारा 7,396 है। तो देयरफॉर आई एम एंटाइटल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड, even the my lord may kindly come to the reply of the state in my petition. The annexure R1 page 8. My lord, according to their reply, ये एडमिट कर रहे हैं, देखेंगे मुख्य परीक्षा हेतु पात्र घोषित अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या, माय रेट पिटीशन 20 गुना संख्या अनरिजर्व की 8100, जो मेरे पैरा रेट पिटीशन के पैरा 8100 आया है 9.4 में, जो महिलाओं वाला था। उसके बाद इन्होंने दे दिया पात्र घोषित कुल 8,450। अब ओपन महिला 2,652 कर रहे हैं, पुलिस महिला 59, महिला सूची में शामिल कुल संख्या 2711, रिक्ति 2430 की जगह 100 कट ऑफ मार्क्स 140.625, उस जो ज्यादा चला जा रहा है कट ऑफ मार्क्स के बेस पे। भूतपूर्व सैनिक 510, जो मैंने 517 डेमोस्ट्रेट किया था वो 517 इनकी रिप्लाई में आया सब, ये ऑलरेडी लिस्ट में है। ओपन पुरुष संख्या को छोड़कर 4,857, इसमें इन्होंने गड़बड़ किया है, ये कट ऑफ मार्क्स बना दिया है 171.875। इट इज इन देयर रिप्लाई कि इट इज कि मतलब वो कट ऑफ मार्क्स 171.875 है एंड पिटिशनर का कट ऑफ मार्क्स 165 है, तो इसलिए ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। हाउएवर इन द अगेन उसके ठीक नीचे में पुलिस पुरुष संख्या 372, और सर इसमें कट ऑफ मार्क्स दे रहे हैं 165.625 विच इज ऑब्टेन्ड बाय द पिटिशनर इटसेल्फ। अगर कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे पुलिस का 372, कट ऑफ 165.625 है, 625 है, तो आई एम ऑल्सो ऑब्टेन द 165.625, तो व्हाई आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन माय लॉर्ड। एंड देयर आफ्टर अगेन 5,229 सूची में शामिल ओपन एवं पुलिस पुरुष 5,229, रिक्ति 5,160 की जगह कट ऑफ ओपन 171.175 उसका बता दिए, 165.625 का इसका बता दिए। हाउएवर द मेरिट लिस्ट, according to the rules, the merit list prepared combinedly, my lord, for main examination as per the rules। ये पेज 17 कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की 1, उप निरीक्षक रेडियो अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज की 1, और उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम की 1, ये 3 मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो इन्होंने तो ये वहीं पे सेपरेट कर दिया साहब, उसको 171.875 अलग कर दिया और 165.625 वो गड़बड़ वहीं पे हो रहा है। वेरियस दो उनका तीनों का एक ही लिस्ट बनानी है इनको, मेरिट लिस्ट। हाउएवर according to their reply, I am also entitled for the next round because the cutoff marks is the 165.625, और जितने 165.625 पाएंगे वो मेन एग्जामिनेशन के लिए तो एंटाइटल होंगे ही सब। ठीक हो गया आपका। That is my submission, and therefore the main list is the total vitiated,
and I am entitled for the main examination, my lord, as per the उस पे ला बता रहे थे आप 22 and 25. नहीं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, उस पे क्या लॉ है? My lord, that is the 2009 volume 5 SCC 2009-5 2000 2009 हाँ volume 5 SCC page number 1 पैरा 1 पैरा पैरा para 29. पढ़े जरा। My lord, indisputably, the preliminary examination is not a part of the main examination. The merit of the candidates is not just thereby, only an eligibility criteria is fixed. The papers for holding the examination comprise of general studies and mental ability. Such a test must be held to be a necessary for the purpose of judging the basic eligibility of the candidates to hold the test. I'm saying here they can, this is the only for the scrutiny of the student, because the total application form is the total applicants are appear in the examination 62,995. How and in what manner the state as also the commission would comply with the constitutional requirements of the Article 335 of the Constitution of India should ordinarily not be allowed to the question. Article 335 what says, my lord? The right of the SC/ST candidate cannot be deprived. Here not deprived, my lord, because the Only it's only a scrutiny test according to you. Yes. Yes. Therefore, the judgment is totally applicable upon my case. So, if the reservation rule is applied or not applied, in both conditions, the petitioner herein, item number 20, 25, and 26, are entitled to the main examination. 26 कौन सा है? 26 में पुलिस डिपार्टमेंट का है, उसमें भी वैसे ही कैलकुलेशन मैंने पिटीशन में ही कर दिया है. 4142 4142 और तीसरा 4149 4149 419 27. Item number 26, 27, and 22. ठीक. 22 and 26 are the same, and 27 only for the police department. वो पुलिस डिपार्टमेंट का रिजर्वेशन लेते हुए उसमें मेरा क्लेम. ठीक. Next. 26, 27, and 22. 29. और कौन है? May it please your lordships. My lords, I am appearing in matter 28, serial number 28 and 55. 28 and 55 petition number बताएं. My lords, WPS number 4166 of 2023 4166 23 and WPS 4523 of 23. My lords. of 23. क्या लिखते हैं आप? Anadi Sharma, my lords. आपका क्या डिफरेंस है? My lords, these two particular cases, my lords, belongs to ex-servicemen. Petitioners are ex-servicemen, my lords, and here we are only concerned for the for what has happened after the mains exam, my lords. My lords, in my एक मिनट. The file 28 Bhulesh. yes बता. My lords, here, my lords, at page number 34 is the advertisement, my lords, dated 17/9/2021. My lords, here there is a 10% reservation for ex-servicemen category, my lords. Now, my lords, the total post as per before this, my lords, my lords may come to page number 59. This is, my lords, that gazette notification where it is mentioned separate merit list, Prithak Chayan Suchiya. In that, my lords, there are 4 posts for which a separate merit list will be made, my lords.
That is for Subedar, Sub-Inspector, Sub-Inspector, Special Branch, and Platoon Commander, my lords. For that, the posts are, my lords, 951 posts, my lord. We are only concerned with 951 posts and not 970 and so on, my lords. So my calculation will be accordingly 951 as per 951 posts. कौन सी? My lords, it is of Subedar, Upnirikshak, Sub-Inspector, Upnirikshak Vishesh Shakha, Sub-Inspector Special Branch, and Platoon Commander. My lords, now 10% of 951 posts comes to 95 posts, which are reserved for ex-servicemen. 951 कहाँ से आया? 951 my lords, ये सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर का पोस्ट को ऐड करने से 951 पोस्ट है। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट जो हुई थी 975, उसमें से ये 951 ये हो गए जी, जिनकी पृथक चयन सूचियां ठीक रहेगी। है जी। इसका 10% 95 पोस्ट फॉर एक्स सर्विस। देखिए उस दिन बता चुके हैं ना सेम पॉइंट। नहीं मिलोट्स, ये वो प्री के लिए था मिलोट्स, ये मेंस के लिए, और उनका पॉइंट अलग था मिलोट्स। आई विल नॉट रिपीट द आर्ग्यूमेंट्स मिलोट्स। यस 10% हो जाता है 95 posts. Now, milots, using the same explanation as given by the clause of Prithak Chayan Suchiya, it is provided that 5 times the number of the candidates as per the post, milot, 5 times the number of posts will be called for physical proficiency test. So 95 into 5 comes to 475 posts. Thereafter, milots, now also there is a provision, milots, which calls for every candidate who has scored the same score as the last candidate in the merit list. Yes. They will all have to be called. So, milots, here as milots has been apprised, milots, that they have not published the marks, milots. So we do not know what is the marks of the last candidate. And if we do not know the marks of the last candidate, then we do not know if we are to be called, and if we should make an objection, we should do something. Thereafter, milots, in the reply of the state, they have said at milots, this is reply of the state, milots, at page number 23. They are themselves saying that they have only called 321 candidates out of 475 candidates. How much? 321 candidates they have called. This is in their reply notes. So 154 candidates, that is 475 minus 321 comes to 154 candidates. In the same page of their reply, they are saying that we have seen, my lords, how 95 multiplied by 5 is 475. Now, my lords, in their reply, they are saying that only 474 candidates were ought to be called. So that one post is missing as per their reply. So what the state is saying, my lords, is that we were ought to call 475, but we have called 321. This is their stand, my lords. We are saying that it should have been 475 in the first place, and you should have called 475. But what they have done is, my lords, that they have categorized the ex-serviceman category, ex-serviceman class, for which the reservation of 10% has been provided as per Article 16(1) of the Constitution, my lords, and not as per Article 16(4) of the Constitution. What they have done is that they have mixed both.
And they have categorized the ex-serviceman class into OBC, unreserved, OBC, SC and ST. Hmm. And now they are saying that we could not find SC and ST candidates of ex-servicemen. Therefore, we have not called. This is the cases, my lords. Hmm. Therefore, the ex-servicemen who were already in the zone of, my lords, comparative merit should have been done, because this ratio of 1:5 is to get, my lords, the comparative merit, and not that they may be further categorized, and people who are falling in that zone, who are already in merit, they will lose their chance. And they will not be and their right of being considered and getting onto the merit list as per their merit is being lost, my lords. Yes. Now, my lords, as per the my lords may come to my petition, my lords, at page number 14. 4166. G, my lords, 4166 में Page number 14. again, part of pleading. Part of pleading, my lords. Para number. My lords, here, my lords, may see a chart. Hmm. My lords, this is one hypothetical that I have drawn for my lords. My lords, in the state of Chhattisgarh, my lords, unreserved category gets a reservation of 42%. Scheduled caste gets a reservation of 12%. ST gets a reservation of 32%. And OBC gets a reservation of 14%. My lords. Now, in this hypothetical, assuming that there are 100 posts, out of which 10% reserved for ex-servicemen would be 10 posts. And if we divide them as per this chart, my lords, as per this percentage, always there will be one post lying vacant. And since it is a horizontal reservation for ex-servicemen, my lords, only, my lords, 9 posts is being filled. That is violative, my lords, again, of the horizontal reservation, my lords, principle. And here what is here what is happening, my lords, as we have seen, my lords, 95, there are 95 posts for ex-servicemen. 42%, my lords, may I may bother, my lords, to take around, my lords, 42% of 95 is 39 decimal something. Excuse me. Then 12% of scheduled caste is 11 post. 32 of ST is coming to be 30 post. And 14% of OBC is coming to be 13 post, 13. Total of which is, my lords, 93 posts. But they were to be, my lords, 95 posts were to be filled. So 2 posts are lying vacant, and they have not adjusted any unreserved candidate, or nothing has come in their reply, my lords. They are silent on that. So the calculation of 2 posts has to be given, my lords, by them. If at all we accept, my lords, hypothetically their contention, and as per their contention, this is the case, my lords. And then again, my lords, may allow me to come to my earlier contention, my lords, that ex-serviceman is a separate class. For that, my lords, I am relying at page number 112. A case decided by, my lords, Allahabad High Court Division Bench judgment, my lords, in the case of Sheo Sekhar Singh versus PSC UP Allahabad, my lords. For which the relevant page is, my lords, page number 114, paragraph 10. Read it. My lords, as the reservation in favor of ex-servicemen falls under Article 16(1), Article 16(4) of the Constitution is not applicable to it. Considerations and the basis of reservation under Article 16(1) being different from what is contained in Article 16(4), posts reserved for ex-servicemen cannot be distributed, divided, or allocated on the basis of the castes of ex-servicemen.
dividing vacancies reserved for ex-servicemen and allocating them to scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, and general candidates is therefore without jurisdiction. All ex-servicemen who applied against their reserved quota have to be treated as persons belonging to the one and the same class, and all of them are to be considered against all the vacancies reserved for them strictly on the basis of the merit, irrespective of the caste or class to which they belong. Claim of the petitioner is therefore, and so on and so forth. It was allowed. Now, this is one case, my lords. Yes. Thereafter, my lords, if we see, my lords, what again, my lords, I may bring my lords to the reply of the state, where they have in a tabular form said that they have only called for 321 candidates. Here, my lords, Relevant page and para of reply. 23, page number 23. Yes. Here, my lords, the table which is on the upside, my lords, it's how it should have been, in which I have pointed out that 474 instead of 474, my lords, one post is missing here. Then the table at below, my lords, it is what they have actually done. Where 154 seats have been, my lords, it is kept vacant, my lords. Which are not being, which, my lords, they have not filled with other ex-servicemen unreserved category, my lords. Neither they have filled it with other scheduled caste and scheduled tribe who are not ex-servicemen, my lords. Either way, there is a, my lords, vacuum of 154 posts, my lords, which has to be filled either by, my lords, ex-servicemen taking their contention, or my contention, my lords, by taking ex-servicemen, or their contention by taking other scheduled caste or scheduled tribe person who is not belonging to ex-servicemen, my lords. Anyway, either way, it has to be filled, my lords, that gap. Otherwise, such many persons, my lords, they will lose their right of being considered, my lords. Okay. This is it. Then. And lastly, my lords, I apologize, my lords. Lastly, my lords, which I was supposed to, my lords, make the first point, my lords, is that in the advertisement, they have only given for 10% reservation for ex-servicemen. They have nowhere said such many posts for ex-servicemen belonging to unreserved caste, SC caste, ST caste, and OBC caste. Yes. This is, I'm obliged. आपका बचा है मैडम? Only single point I'll be arguing on that, Your Lordship. My petitioners are the in-service man, Your Lordship, and they were not given the benefit of 5% reservation. I'm arguing on only single. I'm arguing on in serial number 13 and 17, Your Lordship. Especially in the serial number 30, I'll be making a single point, and that is Petition number 13 and 17. Petition number Petition number 13 and 17. number बोलिए number 13393 of 2023, I'll be arguing. 3393 Of 2023, I'll be arguing. And I'm making a single point, Your Lordship. Yes. And that is, my petitioners have arrived before this honorable court at the time of, after they were not were not selected in the prelims examination, Your Lordship. They're in service man, and they were not given the benefit of 5% reservation. So my only argument is that there are men के लिए 5%. Ji. My only argument is that, Your Lordship, there were other various petitions that were filed after by the petitioners who were rejected in the mains examination. So there is a settled law, Your Lordship, in this regard, and that is those candidates who had taken the part in the examination, and now they are at the later stage. They were participated knowingly
knowing the process fully, Hmm. and now they are approaching the court Hmm. after they were rejected, so they cannot do so. That's all. And there is a list of judgments Hmm. and the same. I'll be providing the same. I have provided the copy of the same, Hmm. and that's the only one point I'm making. Hmm. And they were given the benefit of supernumeric post Hmm. if possible, and under the 5% rule. That's all. Basically, it's a mercy petition. Yeah. Yes. Monday उनका हो जाए, उसके बाद आप लोग को सुने आफ्टर कंक्लूजन ऑफ मिस्टर सिन्हा पाठ नहीं। मंडे मंडे 3 को लंच के बाद ही, फ्रेश के बाद 20 में भी मार्क कैसे पाठ मंडे के बाद करेंगे। जी। सर 5 दिन बाद बोलेंगे हम आर्गुमेंट नहीं हुआ, इसलिए पिटीशन का आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया, इतना कम से कम नहीं अभी बचा हुआ है तो जितनी जल्दी आप लोग कंक्लूड करो अच्छा है। पार्ट हट नहीं करूंगा, यस मैम पार्ट हट डिक्लेयर नहीं करूंगा। जितने जल्दी आप लोग कंक्लूड करो, क्लोज करेंगे सीधे। जी। कल किसने देखा? नहीं सर, पार्ट तो हो ही गया। पार्ट हो गया इसलिए मतलब आपके बोलने से थोड़ी हो गया। जी। तो अरे ठीक है। जी वो लोग रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं पूरा स्क्रीन मंडे लगा ऑर्डर शीट में आ जाए तो कंक्लूड हो गया। मंडे बचा है उनका अभी, बचा वेट करिए। और एक आध कोई अचानक भी आ सकता है, कोई बच अब देखेंगे अचानक पे। अचानक जी। इंडिकेट कर रहे हैं पहले से। नहीं ऐसा करके चलो चलिए, बाकी कर लेंगे। जी। नहीं ये तो नहीं, इसको तो मंडे लेंगे, बाकी मेंशन बाकी जितने हैं वो कर लेंगे। सेकंड हाफ में कल मेंशन ले लेंगे बस। गुड फर्स्ट हाफ में जितना फ्रेश होगा